are going to learn Mathematics Standard 4th, Chapter number 12, Perimeter and Area. So let us read and understand, students. The perimeter of square. The perimeter of a square is the sum of the length of all the four sides of the square. In the figure, each side of the square is 3 cm. See the students, this is the figure of square and this is the measurement of this line, 3 cm, 3 cm, 3 cm, 3 cm. Why each side of the square is of 3 cm, students? Because all the sides of the square are equal. The perimeter of the square, the sum of the length of four sides, 3 plus 3 plus 3 plus 3 centimeter is equal to 12. Therefore, the perimeter of the square is 12. In short, students, the perimeter means the sum of all sides, whatever the figure is given to you. Whether it is square, whether it is rectangle, whether it is triangle. The perimeter of a rectangle. The perimeter of a rectangle is the sum of the length of all four sides of the rectangle. In the figure, the side of the rectangle are 4 cm, 3 cm, 4 cm and 3 cm. See the students, 4 cm, 4 cm, 3 cm and 3 cm. These both sides are equal. The perimeter of the rectangle, the sum of the length of four sides, 4 plus 3 plus 4 plus 3 plus 3 cm is equal to 14 cm. How? We can also write the formula 2 into length plus 2 into breadth. This means that, students, 2 times length and 2 times breadth. See that, 3 plus 3, 4 plus 4. 4 occur 2 times, 3 occur 2 times. This means that you can write 2 into length and 2 into breadth. Therefore, the perimeter of the rectangle is 14 centimeter. The perimeter of a triangle. The perimeter of a triangle, here is a mistake, print mistake, students. A is not written here. The perimeter of a triangle is the sum of length of all the three sides of the triangle. In the figure, the side of the triangle are 2 cm, 3 cm and 4 cm. 2, 3 and 4. We have to count 2 plus 3, 5. 5 plus 4, 9. The sum of the length of three sides, 2 plus 3 plus 4 is equal to 9 cm. This is the perimeter of the triangle. Students, in short, you have to count all the sides, you have to do the sum of all sides. In short, the sum of all sides of the figure is called perimeter, whatever the figure is given. Understood, students? देखो, मैं तुम्हें हिंदी में समझाती हूँ कि ये जो भी फिगर हमें मिलती है उसके ऑल साइड, ये जो बाजू है इसे साइड कहते हैं, ये जो साइड जितने भी दिए हैं हमें इन सब साइड्स के काउंट करना है. 3 प्लस 3 6, 6 प्लस 3 9, 9 प्लस 3 12. इसी तरह से रेक्टेंगल भी देखते हैं. रेक्टेंगल को देखो कि दो साइड सेम है और दो साइड सेम है, मतलब इसकी डबल हुई और इसकी डबल हुई, इसीलिए 2 इंटू लेंथ, मतलब लेंथ दो बार और ब्रेथ भी 2 बार आई है, उसको डबल मराठीत आपण दुप्पट म्हणतो. 3 प्लस 3, 3 इंटू 3 इंटू 2 मतलब 6 और 2 इंटू 4 मतलब 8. इस तरह से भी हम कर सकते हैं बच्चों. देखो बच्चों, मैंने यहाँ पर किया है 2 इंटू लेंथ 2 प्लस 2 इंटू ब्रेड, 2 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 4, 6, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8. यहाँ पर 8 लिखा, 6 लिखा, 6 प्लस 8 इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर. या फिर हम इसे इस तरह से भी काउंट कर सकते हैं. ये हमें आगे चल करके जब हम 5th 6th 7th 8th में जाएंगे तब हमें ये फॉर्मूला काम आएगा बच्चों. तो इसे अच्छी तरह से याद कर लीजिए. पेरीमीटर ऑफ अ ट्राइंगल, सम ऑफ ऑल साइड्स. देखो यहाँ पर भी ट्राइंगल के तीनों साइड का हमने यहाँ पर हमने ट्राइंगल का तीनों साइड का प्लस किया है. 2 सेंटीमीटर प्लस 3 सेंटीमीटर प्लस 4 सेंटीमीटर
is equal to 9 centimeter. Students, sum of all sides, whatever figure is given, you have to count all the sides and write the perimeter of the figure. Let us understand the area. Students, the measure of the place occupied by a figure is the area of that figure. एरिया मीन्स वॉट एवर द एरिया इज कैप्चर्ड बाय द फिगर. अब देखो इस ट्राइंगल ने कितना एरिया कैप्चर किया है, इसे हम एरिया कहते हैं. ओके स्टूडेंट्स, ये मेजरमेंट के साथ जो एरिया उसने कैप्चर किया है उसे हम एरिया कहते हैं. द एरिया ऑफ स्क्वायर 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 SQ सेंटीमीटर. जब भी हम स्क्वायर एरिया लिखेंगे तो SQ लिखना भूलना नहीं है. SQ इज द यूनिट ऑफ एरिया. ए स्क्वायर of side 1 centimeter is used as the standard unit of measurement of area. SQ centimeter and SQ meter are the units of area. अगर मेजरमेंट लेंथ की सेंटीमीटर में दी है तो हम SQ सेंटीमीटर यूज करेंगे. अगर लेंथ की मेजरमेंट मीटर में दी है तो SQ मीटर हम आंसर को यूज करेंगे. वो कैसे आगे देखते हैं बच्चों. Here is the rectangular piece of paper. It is divided into square with side 1 centimeter. To find out its area, count the number of squares. अब देखो ये जो नंबर है इस नंबर को देखना नहीं है, हमें ये स्क्वायर्स को काउंट करना है. ये कन्वीनियंसी के लिए लिखा है यहाँ पे. ये फर्स्ट स्क्वायर, सेकंड स्क्वायर, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6, 7, 8, 9, 10. मतलब कि एक का अगर मेजरमेंट 1 सेंटीमीटर है तो 1 सेंटीमीटर के कितने बॉक्स हैं यहाँ पर 10 है. इसलिए देयर आर 10 स्क्वायर्स. देयरफॉर द एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर पीस ऑफ पेपर इज 10 SQ सेंटीमीटर. देखो यहाँ पर मेजरमेंट क्या दिया है 1 सेंटीमीटर, इसीलिए एरिया भी सेंटीमीटर में ही लिखेंगे, लेकिन उसके आगे SQ हमें यूनिट लिखना भूलना नहीं है बच्चों. Now let us do the practice work, class work and homework. You have to complete this work in your home notebook and in your workbook also. Students, find the perimeter of the figure given below. This is the rectangular, this is the square and this is the triangle. We have to do the sum of all sides. Sum of all sides is called perimeter. 4 centimeter plus 2 centimeter plus 4 centimeter plus 2 centimeter is equal to 12 centimeter. 2 plus 2 plus 2 plus 2. The perimeter of the square is 8 centimeter. 3 plus 4 plus 3. The perimeter of the triangle 10 centimeter. The length of the sides of some triangle are given below. Find their perimeters. 8 centimeter, 9 centimeter and 10 centimeter. The length of the triangle. The sum of lengths are given here. So you have to count all the sides of the triangle, students, and your answer will be ready. This is the answer. Perimeter of triangle 27 centimeter. This is the next examples. Numbers are changed. Example is same. Okay students, let us see the next example. The side of rectangular field are 175 meter, 140 meter, 175 meter and 140 meter. Both sides are equal. This means that this figure, this field is in rectangular shape. So the perimeter of a rectangular field, the sum of all sides, you have to count all the sides and your answer will be ready. 620 meter. This is the perimeter of the rectangular field. Find the area of the following figures. We are going to do the area of the figure, students. Students, here is the figure of square. Area of the figure. The area of the figure, the number of square 12. How many square? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 squares. This is the square. This is the square. This is the separate square. 1 SQ centimeter. 1 SQ centimeter. 1 SQ square. SQ means square centimeter. Students. So how many squares are there? 12 squares means the area of the figure is 12 square centimeter, students. The number of square 1, 2, 3, 4, 5, 6. So 6 square centimeter is the area. So in this way, this is very interesting, students. You count the square and write the area of such figure, students. Practice it very well, students. Okay, bye bye.